Conservative approach of working capital management, financial management मॉड्यूल 148। इससे पहले हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की एक अप्रोच को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है। हमने ये बात देखी कि वर्किंग कैपिटल हमारी एक ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर किसी बिजनेस को चलाया नहीं जा सकता। इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हमें सामने रखना है। वन विच इज़ द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, वो टेम्परेरी होगी या परमानेंट होगी, और दूसरी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग वो शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी। हमने हेजिंग अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये बात देखी थी कि किसी बिजनेस में जितनी हमें लॉन्ग टर्म या परमानेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होती है उतनी ही हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं, और जितनी हमारी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की उतनी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं। यानी वी मैच द रिक्वायरमेंट विद द सिमिलर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि हमने पहले ये बात कही कि कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब है कि हम थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं, यानी वी वुड लाइक टू हैव सरप्लस कैश और सरप्लस वर्किंग कैपिटल ऑलवेज अवेलेबल विद अस इन ऑर्डर टू हैव अ व्यू पॉइंट दैट कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाए। सो टू अवॉइड any possibility of shortage of working capital, we act a little conservative, so we keep some working capital with us even when we do not need that working capital. यानी हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने वर्किंग कैपिटल की वो टेम्पररी रिक्वायरमेंट जो कि थोड़े अरसे या सीज़न के लिए है, उसके कुछ हिस्से को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से मीट करते हैं। इन हेजिंग अप्रोच वी ओनली टेक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर परमानेंट रिक्वायरमेंट, बट इन कंजर्वेटिव अप्रोच some portion, some part of our temporary requirement is also met through long term financing. तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि when we'll have a mix of short and long term financing and the proportion of long-term financing will be more, our cost of financing will be higher. Let's have a look at the graph which actually explains how conservative approach of working capital management actually works. Again, we see that the first horizontal line moving from left to right a little upward is the fixed assets requirement, which is always a permanent requirement, and we have got long-term financing for that. Another graph, straight line, which is moving from left to right a little upward, is that portion of working capital which is always needed, the permanent requirement. So what we are doing, we are meeting both these requirements with long-term financing. But if you have a look at the third blue dotted line, which is above that graph, which is indicating the permanent requirement of working capital, this portion, the dotted portion, and the straight line which is representing the permanent requirement is actually that small amount or small proportion of working capital's temporary requirement which is met by long-term financing. So if you see at the right side of your screen that your long-term financing does not end where the long-term or permanent requirement ends, but it goes beyond and above that, and hence some portion of temporary requirement is financed by long-term financing. तो जो बाकी पोर्शन है टेम्परेरी रिक्वायरमेंट का वो कम रह गया, वो थोड़ा रह गया, और हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिड्यूस हो गई। यानी इस अप्रोच के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन बढ़ गया और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन कम हो गया।
इसको सामने रखते हुए हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ हमें नज़र आते हैं जिसको हम आइडल फंड्स कह सकते हैं, कि जब हमारी शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी लेकिन हमारे पास वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मौजूद रहेगी, तो इस एरिया के अंदर हमारे फंड्स अनयूटिलाइज्ड होंगे और अनयूटिलाइज्ड फंड्स के ऊपर भी हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पे कर रहे होंगे. सो दिस इज समथिंग विच विल सर्टेनली इंक्रीज आवर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड विच विल रिड्यूस आवर प्रॉफिटेबिलिटी. तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हेजिंग अप्रोच के मुकाबले में कम हो जाती है. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कम है और हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा है. और ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा है ये हमारी कॉस्ट को बढ़ा देता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को बढ़ा देता है, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है. बाय द वे, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? अगर हम इसके बारे में सोचें कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न क्यों चार्ज करता है, तो उसका बेसिक आंसर ये है कि व्हेनेवर financing is given for longer term, the uncertainty or the risk element increases. यानी अगर हम 3 महीने के लिए किसी को लोन दे रहे हैं, so we can forecast the possible changes in the next 3 months and we can be pretty sure or we can anticipate that where we would be standing 3 months from now. But if we are providing financing for, let's say, 5 years or 3 years or 10 years, then a lot will change in that period. Economic conditions, political conditions, the social conditions, business conditions. So there'll be a lot of uncertainty when we talk about long-term financing. Now, that is why, to cover that additional element of risk, banks and financial institutions would charge more interest, or they would like to have more return on their financing, and so long term financing becomes more expensive than short term financing. So हम अपने इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हुए, इस अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच की डिस्कशन को ख़त्म करते हुए यूँ कहते हैं कि इन कंजर्वेटिव अप्रोच द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मिनिमम. यानी हमारा जो प्रॉफिट है जो हम उस बिज़नेस से जनरेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कम होने और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बढ़ने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग की फिगर है वो ज़्यादा हो जाएगी. एंड वी नो दैट प्रॉफिट एंड कॉस्ट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि जब कॉस्ट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाता है. तो दिस इज़ द सेकेंड अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट.